Unify to notify urges government to classify cancer a notifiable disease in India. Yes, my dear friends, Apollo Cancer Center in collaboration with IMA, Indian Medical Association, launches a nationwide campaigning Unify to Notify on World Cancer Day. The campaigning urges the government of India to classify cancer a notifiable disease, a much needed to critical step for combating the menace of the disease. But to give you a broad level idea, first advantage is that it will enhance the data accuracy and ensure that every case is recorded and overall a realistic picture of the cancer's impact across the country is provided. Second is that it is likely to improve treatment protocols with standardized guidelines that help in delivering consistent and equitable cancer care. And last but not the least, there will be a strengthening of research and policy decisions once a national cancer registry is made. It will also boost funding and enable more personalized treatment approaches. In 2022, it's important to note that the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare recommended that cancer be classified as a notifiable disease. Today, while some states in the country have done it, but many states still haven't notified or made cancer as a notifiable disease in this country, and hence we have gathered here to push for that notification across the country. We come together to support some leading oncologists and healthcare professionals who are with us today, and others partners and stakeholders in oncology care. Our campaign, which is called United to Notify, reflects this unified stand that cancer care is not just an individual fight, it is a collective responsible, and together we must come and create a transformative shift. President, Indian Medical Association, Bangalore, to speak on a step to bridge the current gaps in cancer surveillance system. Your Association, Bangalore branch. Welcoming the Apollo team, well vibrant, and they are spearheading the change of cancer treatment in India. And all the first friends welcome. Today is World Cancer Day. Union for, which is the largest and oldest global organization to celebrate the World Cancer Day, making it an awareness to the public and to the stakeholders to take charge the whole year what they have progressed to eradicate, control and bring a happiness to the cancer patients. The World Cancer Day is an initiative against the cancer where the entire world unites together to fight against the global cancer epidemic. Cancer. It also presses the drugs into those which can be the category of customs free, and then setting the mandate to start 200 cancer daycare centers, plus in the next 3 years an initiative to add at every district hospital cancer centers. But all this will not translate to having a paradigm shift in the way cancer is managed unless you first identify the disease, you understand the cause for it, and you also create, after notification, a registry and do something to reduce the burden of cancer, because you are frankly doing what is called as a fait accompli or a post event, where you actually set up something to keep treating people rather than taking steps to find out ways to reduce the burden of cancer, in some case eradicate it, and in some case to prevent it from vaccination. So one of the things we have taken up, well, there's another discussion we could have on the Made in India indigenous. I suggest this, don't consider this as my question, consider this as my suggestion, because you have to make an inclusive lobby to attain this, because much was talked by doctor regarding the prevention. Prevention is, development is going on so much for prevention. What I mean to say is, you can even create a lobby. I think the insurance people has to be one of your stake members. Why? Because any disease,
any treatment in cancer is nowadays in the present scenario is supported by the insurance. So the insurance people has to be one of your state members and they have to be in your panel so that, why? Because I am suggesting you this is, the insurance people should make it very mandatory, whether highly registered. So that is the one way that you can make all the cancer patients, because the moment when your insurance claim is denied, then automatically every people will become alert. Very insightful. But I just give an anecdotal example to what you're saying to understand where the problem lies and why we looked at IMA and not just the insurance company. IME is already involved. Like you make insurance also one of your stakeholders or maybe panel member. Valid or the most enforceable entity in any state or a city is the Indian Medical Association with a आज वर्ल्ड कैंसर डे पे हम सब साथ आए हैं टू यूनिफाई टू नोटिफाई। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं एज डॉक्टर्स कि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ बनाया जाए। ये काफ़ी स्टेट्स में नोटिफाइबल डिजीज़ है पर एक नेशनल पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर, और जिस स्टेट्स में नोटिफाइबल डिजीज़ है उसमें भी वॉलंटरी नोटिफिकेशन है, मैंडेटरी नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि कौन सी जगह में कितना कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है या कौन सा स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है, हम एक्यूरेट पॉलिसीज़ नहीं बना सकते हैं। कैंसर को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे पहले उसको प्रिवेंट करें या उससे अर्ली डायग्नोसिस करें, और बिना नोटिफाइबल डिजीज़ बनाए हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं कि हमको कौन सी एरिया में कौन से कैंसर का कितना अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आगे भी जब कैंसर रिसर्च की बात आती है तो हमारा कंट्री रिसर्च में लैक करता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर हम कौन से जगह में जो कॉमन कैंसर्स होते हैं हम उस पर फोकस करें, फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स में टोबैको रिलेटेड कैंसर ज़्यादा होते हैं, कुछ स्टेट्स में इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर ज़्यादा होते हैं, तो हम अपना रिसर्च उसके अनुसार फोकस कर सकते हैं। पर सबसे पहला इशू क्या होता है कि हमें कौन से एरिया में कैसा कैंसर है, कैंसर का इंसिडेंस क्या है। आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है कि इंडिया में करीबन 14 लाख कैंसर डायग्नोस होते हैं, पर ये एक्चुअली में सही है कि नहीं हमें वो ही नहीं पता अभी तक। हमें ये एक्सपेक्टेशन, ये सोच है कि हमारे 14 लाख कैंसर में से 8 लाख कैंसर्स की डेथ होती है, पर ये डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है वो भी नहीं पता हमें। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एक नेशनल पॉलिसी बनाया जाए कैंसर के ऊपर, जिसमें कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ करार किया जाए। थैंक यू। कैंसर महिलाओं में खासकर देखा जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर को, उसके ताल्लुक से क्या कहना है? सो ब्रेस्ट कैंसर तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स है इंडिया में, मेनली अर्बन एरिया में ज़्यादा देखा जाता है। पर ब्रेस्ट कैंसर में हमारा आउटकम कंपेयर टू वेस्टर्न दुनिया से काफ़ी कम है, बिकॉज हमारे ब्रेस्ट कैंसर जो डायग्नोस होते हैं वो बहुत यंगर एज में डायग्नोस होते हैं और ज़्यादा एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं। अब ये क्यों होते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ लेट डायग्नोसिस क्यों होती है। वन ऑफ द रीजंस दिया जाता है कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। जब तक स्क्रीनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश नहीं होगा अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें पता चल जाता है कि कोई कैंसर रजिस्ट्री के थ्रू कि कौन से एरियाज़ में अर्ली डायग्नोसिस होती है, कौन से एरियाज़ में लेट डायग्नोसिस होती है, तो हम अपना स्क्रीनिंग प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हैं। सर, कोरोना आने के बाद सरकार अलर्ट होती है, उसके लिए वैक्सीन बनाती है। हाँ। ये कैंसर ऐसी खतरनाक बीमारी को आज तक वैक्सीन क्यों रेडी नहीं है? सो वैक्सीन जनरली इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है, और कैंसर काफ़ी कैंसर्स इन्फेक्शन के कारण होता है। हाँ, काफ़ी कैंसर्स इन्फेक्शन के थ्रू होता है, उसकी वैक्सीन बनती है। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर है, वो HPV इन्फेक्शन के कारण होता है, और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है मार्केट में जो काफ़ी लोग लेते भी है, पर उसका पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है। जनरली सर्वाइकल कैंसर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है, पर वहाँ सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन उतना इस्तेमाल नहीं होता है जितना अर्बन एरियाज़ में होता है। सिमिलरली लिवर कैंसर के अगेंस्ट जो हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट होता है उसके खिलाफ भी अपने पास वैक्सीन है जो हमको यूटिलाइज करना चाहिए, पर इसका पेनिट्रेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है, पर उसका पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह HIV का था वैसा उतना नहीं है, और अपने को अवेयरनेस करना चाहिए इसके बारे में। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर विजय अग्रवाल, अपोलो हॉस्पिटल में लीड कंसल्टेंट हूँ।